इधर उधर होने के कारण से डॉक्टर बीसी पिंचा का नाम नहीं आ पाया, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन बीसी पिंचा तो अब नहीं है, भाभी जी आई हैं और हमें बहुत अनुग्रहित हैं उनके कि भाभी ने इसमें शिरकत की। बीसी विशेष करके मेरा अंतरंग दोस्त था। बीसी पिंचा वाले भाभी जी, अर्चना भाभी जी कहाँ हैं, और मानसी और उनकी बेटी, तीन जनरेशन्स हैं बीसी के परिवार की। छोटी आरना भी है। बीसी दोस्तों का दोस्त था और करिश्माई पर्सनालिटी का मालिक था। बहुत अच्छे प्लीजिंग पर्सनालिटी थी बीसी की और ललित कलाओं, म्यूजिक इसका रसिक था। मैं जब मेरी गजलें कोई नहीं सुनता था तो बीसी को बुला के कमरा बंद करके सुनाता था। और बीसी हमें कभी भुलाए नहीं भूलेगा। भाभी जी कहाँ? भाभी जी आइए। मेरे थोड़े से कहने पे भाभी जी तैयार हुई। बीसी के जाने के बाद भाभी जी कहीं अपनी तरफ नहीं गई थी। आध्यात्मिकता के अलावा भाभी जी के जीवन में किसी और चीज़ का विशेष स्थान नहीं है, परंतु हमारे बुलाने पर एक बार में आई और 3 जनरेशंस हम आपका आभारी। आप क्या उनका फैमिली फोटो हम जैसे ही वो फाइंड आउट करके दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। ओके। इनके साथ ये है कि इनके जो बैगेज रहते हैं ना, वो हमारे बीच में एक बड़ी शख्सियत और है जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में डंका बजा के रखा हुआ है। अंबिकापुर का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी जगह स्थापित हुए जो उनकी मातृभूमि और कर्मभूमि भी बनी, और साथ ही उन्होंने ऐसी चीज़ें वहाँ पर स्थापित की जिसको सुनने में आश्चर्य होता है। उनके हॉस्पिटल में कैथ लैब भी अभी चल रहा है। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जेके सिंह। हमने एमडी मेडिसिन किया, हमारे बैच के टॉपर लोगों में से रहे, और इनकी एक खासियत है अपनी मुर्गी की एकता। जो सोच लिया करना है तो दिल से करना है। इनने वहां पर बैच मीट रखा था इतने शानदार रूप से कि हम लोग डर रहे थे कि आगे वाली बैच मीट इतनी अच्छी हो पाएगी नहीं। जितेंद्र के आईक्यू का ये आलम था कि जब पीयू होता था यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसके बाद फिर हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए लग जाते थे, तो पीयू की जो तैयारी होती थी उसके बाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करते थे। तो ये पता नहीं था। इसके जो दोस्त लोग बोलते पढ़ता क्यों नहीं है, तो बोलता मैं क्या करूँ, मैं पढ़ के क्या करूँगा, मुझको तो भूलता ही नहीं। जो एक बार पढ़ता हूँ भूलता ही नहीं, तो दूसरी बार पढ़ के क्या करूँगा। हमारे बीच आ रहे के साहू जो इनका हॉस्पिटल कार्यरत है, इनकी साथ में अर्धांगी साथ में आ रही है। आप अगर नहीं आ सकते तो सामने आ जाए, यहाँ पर नीचे ऊपर नहीं चढ़ सकते तो नीचे सामने आ जाए। के साहू, हम सबकी तरफ से स्वागत है आपका। डॉक्टर किशोर सिंह, जैसा मैंने शुरू में बताया कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, नागपुर तक पहुंचे थे। ये वहाँ मस्कट में है, फैमिली के साथ आ रहे थे, फिर इनका सोडियम लेवल वहाँ कम हो गया और उनको एडमिट करना पड़ा। तो ये हमारे सामने आज नहीं है, पर बहुत इच्छा थी इनको इस बैच मीट के लिए। इनके बच्चे हैं इनके साथ। हमारे सामने एक और शख्सियत आ रही, टोप्पो। इनकी आवाज़ आपने कल सुनी होगी, बहुत अच्छा
गाना गाते हैं और बहुत सुगढ़ फैमिली है इनकी। डॉक्टर लोलस टप्पो, श्रीमती नीरजा इनकी वाइफ है। इनका हॉस्पिटल है वहाँ पर, दिल्ली में ये कार्यरत है। इनके बच्चे हैं जो इनके साथ ही रहते हैं। डॉक्टर टोप्पो, स्वागत है। डॉक्टर मधुसूदन पाल को यहाँ बुलाना चाहूंगा। मधुसूदन, इनने कुछ दिनों पहले अपने बच्चे की बहुत शानदार शादी की थी। वो यादगार सब लोग भूले नहीं हैं। ये भी जिनको चाहते हैं दिल से उनसे जुड़े रहते हैं। इन्होंने एमडी एनेस्थीसिया किया था और सीजी हेल्थ सर्विसेज में थे, आजकल कोरबा में कार्यरत है। इनके बच्चे हैं मेरे साथ। एक और हमारा भाई जो यहाँ पर जबलपुर में सबकी रैगिंग लेता रहता है हम लोगों की, वो है मुकेश कुमार जैन। मुकेश जैन खूबसूरत शख्सियत, जैसा पहले था वैसा अभी भी है और सब लोगों के बीच में, सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से मिलता है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत बुलंद सा। शुरू से इनकी यादें पढ़ते समय से हमारे जहन में मौजूद हैं। धन्यवाद। इनके बच्चे हैं इनके साथ जो रेडियोलॉजी में यही इनके साथ ही काम करते हैं। मॉडर्न एक्सरे क्लिनिक इनका है रामापुर में। प्लीज स्टेज पे आए डॉक्टर टोप्पो। अब आया एक और कलाकार जो इस मंच का पुराना घिसा पिटा कलाकार है और अगर आप तरीके से सोचें तो इसके जो पद चिन्ह हैं आज भी इस ऑडिटोरियम में मौजूद होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अपने ज़माने के बहुत अच्छे नाटककार थे। रमजू की रईसी और ज़रूरत है प्रधानमंत्री की, ऐसे बड़े बड़े हम लोगों ने स्किट किए थे जो आज भी लोगों को याद है। और ऑर्गेनाइजेशन के एक आधार स्तंभ है, बहुत अच्छा इनका ऑर्गेनाइजेशन है। और संस्कारधारी राजनाथ गांव में इनका हॉस्पिटल है जो गांधी नर्सिंग होम के नाम से सालों से प्रसिद्ध है। इनके बच्चे इनके साथ काम करते हैं, साथ ही डॉक्टर भट्टर से भी एसोसिएटेड है। अब समय डॉक्टर कल्पना हमारे साथ हैं। कल्पना कौशल। वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है करिए कल्पना कौशल, मेरी बैचमेट फ्रॉम यूएसए। Oh, thank you so much. You make me. You know what I feel? Parents give birth to the child, but this place is our karmic birthplace. जैसे मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने जो कर्म भूमि है उसकी बर्थ प्लेस पे आई हूँ। जैसे राम भगवान अयोध्या आए हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बर्थ प्लेस पे आई हूँ। दिस इज द प्लेस where my karmic life started. As a physician, I graduated from here, so it's very overwhelming, very happy to be here, and today is the day for celebration, just like Ayodhya celebration in our scale. Thank you so much.
मैडम अनीता मैडम हैं, डॉक्टर कपूर साहब हैं, सजी प्रोफेसर और प्रोफेसर कौल सर हैं, डॉक्टर रैना साहब तबीयत की वजह से यहाँ अनुपस्थित हैं, और डॉक्टर मनोज पाराशर सर हैं, डॉक्टर बीडी सिंह साहब हैं, डॉक्टर मैडम बिश्नोई हमारे बीच में हैं। हम उनको पाकर अभिभूत हैं, अपने गुरुजनों को देखकर, जिनकी वजह से आज हमारा जीवन यहाँ है। और डॉक्टर बघेल साहब एक्सपेक्टेड हैं, शायद थोड़ी देर में वो आएंगे, सर्जरी वाले। मैं हमारे दोस्त और ऑर्गेनाइजर डॉक्टर हसमुख वर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे प्लीज आए और 2 शब्द कहें। इस सभागृह में उपस्थित मेरे आदरणीय पूजनीय गुरुजन, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डीन डॉक्टर गीता गोयन, द यंगेस्ट विजनरी and the best young lady dean any medical college has ever had. And you can see this auditorium is just a tip of the iceberg of the vision she carries and she has for this institution. I am extremely grateful to Professor Kaul sir for having accepted our invitation on behalf of 1974 batch, Professor Kapoor sir, Professor BP Singh sir, Madam Bishnoi and our dear teacher Dr. Manoj Parashar sir. मैं तहे दिल से पूरी टीम का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि that in spite of your limitations, your health problems and your busy schedule, you have been kind enough to join us and bless us on this auspicious occasion, sir. Today, as we stand the 16th of February will be a landmark day for all of us. I remember, sir, this is the very door, as Sudha very rightly said, the entrance to the Ma Saraswati. It was 16th of October, Monday, 1974, when a lot of us entered this very door. And sir, you held our hands. We didn't know what the destiny beholds for us, but you taught us how to walk, how to run and fly high in the skies and soar. I am grateful to you all, my teachers, sir. I am grateful to Dr. Geeta Goyal for being kind enough to give us the permission to host this event at this beautiful renovated auditorium. I am thankful to a special very guest, Dr. Mavi and Jaswinder Kaur, who was kind enough to give a very handsome donation for this installation of the state-of-the-art of the sound music system for this. I am short of words to express my gratitude to Dr. Lalit Srivastava, Professor of Anatomy, who has been kind enough and working with me for the last 3 months to make sure that this event is memorable. I owe my gratitude to all my overseas friends who have come here all the way from USA, Dr. Rajiv Ratna Raju and the ever charming smiling Kadna from Cleveland, and Dr. Ravindra Malhotra from Ohio, Dr. Mavi, who is a pulmonologist. He's accompanied by his wife, Jaswinder Kaur. He's also from Ohio. And the ever charming, tall, dark and handsome. From those days, even today, my dear friend, Kanan Suresh. I welcome you. I have a very special word for my friend Uday Khokar, who has come from UK, in spite of all his limitations, missing his flight, all the troubles, but he's here with you. Thank you, Uday. I am grateful to Dr. Rahul Gupta, who has come from Dubai, and he has been a part of this association, and he was the first guy to come to Jabalpur, and instead of became the host.
Dear friends, sir, let me tell you that your students, your बच्चास, जिनको आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, नाइफ पकड़ के ऑपरेट करना सिखाया, स्टेथोस्कोप पकड़ करके ऑस्कल्टेशन करना सिखाया, और स्लाइड में दिखा के सारे सेल्स, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, आज भी मैडम विष्णोई का इस शहर में, सेंट्रल इंडिया में पैथोलॉजी में कोई सानी नहीं है। मैडम, वी आर ग्रेटफुल टू यू। आपने हम लोगों को सिखाया। और बीपी सिंह साहब शांत, कूल, इतने बढ़िया, जैसे हमारी कल्पना है, उनकी एक मुस्कुराहट से लोग बेहोश हो जाते हैं, ऐसे बीपी सिंह साहब थे, जिनके अंदर घुसते से ओटी में पेशेंट अपने आप लेट के शांत हो जाता है। Sir, thank you so much for coming all the way. I am grateful to all my friends and colleagues who have made all the efforts to come and be a part of this inaugural ceremony of 1974 batch. And I'll take just one more minute if you can't permit me. This event would not have been possible unless it was this man standing over here, J.K. Singh, who inspired us, motivated us, pushed us, punished us, and made sure that this event happens in Jabalpur, because it is a golden jubilee celebration. And this event could not have been anywhere else than this Mati jiska main पैर छू के नमन करता हूं। मैं अपने सब पार्टियों को, उनकी फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग आए, आपने इस महफिल में चार चांद लगाए। अब मैं अपनी कोर टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि had it not been for my dear friend Arvind Dwivedi, the sutradhar of this whole ceremony, it would not have been possible to do it so meticulously, so nicely, to the fine detail. Dr. Arvind Dwivedi, Dr. Sanjay Agrawal, who stands with me, Dr. Narendra Gandhi, Dr. Mukesh Jain, Dr. Neeraj Khare, and the team leader, ladies team leader, Nilima, Sudha, and to name so many. And a special thanks to make this program lively is Dr. Neeraj Khare and Sandhya. They have been doing all this work for the last 6 months, and you see over the period of time that this event has been so graceful. I once again express my gratitude to you all for being a part of this function. Thank you so much, sir. सर, प्यारे तेरे बयान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। मैं इस शुभ अवसर पर, जैसे कि सभी अवसरों पर होता है, दीप प्रज्वलन के लिए हमारे जो डिग्निटरीज, हमारे प्रोफेसर, डीन आए हुए हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर आए। नीचे पहुँचे जल्दी कोई डॉक्टर बीपी सिंह नीचे से आलिया बस्ती रही है। आप तो ऐसे बीच में आ जाइए, ये दोनों तरफ आ जाएंगे, 3 लोग आ जाएंगे, पहले ये हो जाए फिर पहले। अच्छा ठीक है। जाएगा मेरा उसके बाद सब इंट्रोडक्शन बचे हैं ना, लगा धीरे से कर, पकड़ ले बेटा। हमारे साथ डॉक्टर अलका और हमारे बैचमेट्स अलका और टीम है, सरस्वती वंदना प्रारंभ करेंगे। नवजात बच्चा यही नवजात बैच का सबसे चल रहा है, इसलिए तो 70 लोग आ गए, सब ऑन कर देना।
गीता गोविंद मैडम को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर मारवी हमारे क्लासमेट हैं, जिन्होंने इस ऑडिटोरियम के लिए काफ़ी कुछ किया है, डोनेशन दिया है इन्होंने। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर। डॉक्टर गीता मैडम। दिवस के पहले प्रहर सी सूर्य के तेजस प्रखर सी आत्मविश्वासी लहर सी मापदंडों के शिखर सी भोर के सच्चे सपन सी पुष्प का की मादक छुअन सी चंद्र की शीतल किरण सी हवन कुंडों के तपन सी। माननीय श्रीमती डॉक्टर गीता गोविंद। हेलो। सुप्रभात सभी को। Say सुप्रभात। You are in your own college and I am very overwhelmed और मुझे ये जानकर इतनी खुशी हो रही है कि you guys are still kicking, enjoying, flirting, dressing as per the codes, and it is so very enlightening. मेरे भी टीचर्स मैडम बिश्नोई, पीपी सिंह सर, जिन्होंने मुझे मेरे सीजन में एनेस्थीसिया दिया, मैडम बिश्नोई जिन्होंने मुझे मेरा पहला गोल्ड मेडल दिया और मुझे गोल्ड मेडल का चस्का लगाया, Dr. Kaul who loved me, Dr. Kapoor who fought for my post-graduation, Dr. Parashar who gave me my second gold medal in medicine, and all my seniors. It's a really very emotional moment for me. I dropped going to the US just because I wanted to meet you all. Every time you come back to this alma mater, as a dean, it feels my children are back. I can just express the feelings of these walls, these chairs, these buildings, and each of them tells that same story. You are back to your alma mater. Me with folded hands as the dean of this institution, find my children back in my arms. The ones who walked my corridors, smiled, romanced, peeked through the corners. They admired things, they didn't admire so many things. But then I'm sure when you are back here after 50 years, you have just the golden memories with you. I myself have been a student of this college, like I said, and did my graduation, post-graduation, and now to be commanding this college, I really have a whole lot of imaginations, fantasies. It is like I cannot stop working. People call me workaholic, but I want this institution to be something that you never imagined. So, my dear seniors, this is the auditorium that we just renovated and completed 2 months back. And it is my real privilege that Dr. Mavi and Madam Mavi, they gave me a handsome donation. You know how the story started. I wanted, the first thing that I wanted was a very happy campus. Sorry teachers, मुझे वो टीचर्स कभी अच्छे नहीं लगे जो ऐसे दिखाते थे कि मुस्कुराने से पढ़ाई नहीं होती या डांस करने से गाने से पढ़ाई नहीं होती. I did professional theatre, I did dancing, I did singing, and yet I dropped my badge, like my teachers will say, even after the fact that I got married after my first MBBS. So I just wanted to break that yardstick ki fool lagaya. I have been wearing these flowers for the last 15 years maybe or so more. Every patient knows me as Fool Wali Madam, and I carried that
aura into the dean's office. I carried my tattoos in the dean's office. I let myself be what I am. I did not change because I wanted to be the dean. I wanted the college to change and be for the dean and to look as young and healthy as the dean. And therefore, the first thing I wanted is a campus full of happy and smiling and laughing children. So I decided that every month, once a month, we have to get our children together to do some cultural activity. And when I say my children together, आपके समय में नहीं होता था, पर अभी हम 9 पैरामेडिकल कोर्सेस रन करते हैं besides nursing. We have physiotherapy, we have OT technician, we have perfusion technicians. So there are 9 such courses running. जब मैं बच्चों की बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग मेरे बच्चे हैं और वो इस premises में खुश रहना चाहिए. So the first step was that to dedicate 1 half Saturday every month for some sort of happy, pleasurable get together. For that, I needed the auditorium to be good. I needed the auditorium well enough to run a movie together. I told my children, I am going to watch a romantic movie with you guys. And they were so thrilled and I was more thrilled, you know. So, for that, one of the requirements that came up was that we have our own audio system. And you know, the problem is that there are many dreams, there are many aspirations. हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर आप समझते हैं कि हम 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के बाद बहुत सारे लग्जरीज के लिए पैसे नहीं बच पाते हैं. तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं सरकार को बोलूं कि आप मुझे एक ऐसा ऑडियो एंड दीज लाइट्स यू सी, मुझे ऐसा ऑडियो और ऐसा विजुअल सिस्टम दीजिए जिससे कि मैं अपने बच्चों को हर महीने एक खुशी का दिन दे सकूं. So Dr. Mavi came forward and he said that he made a donation for the audio, and actually we put in some more money and we had this lights also for this auditorium. And I'm so happy to tell you that we started by seeing, when please go around the campus, see your lecture theatres. All my friends, Suresh Kannan sir, he hosted my daughter for a long time, thank you sir. All the people who have come overseas, see the lecture theatres and I'm sure you'll be proud. We stood there and made sure that they are made to perfection. And I'm 100% sure that you love to see the lecture theatres. Lalit, it is your duty to take them to their lecture theatres, the new ones. The old lecture theatres where you were students, वो हमने अभी पैरामेडिकल को दे दिया है. वो उनकी क्लासेस उन ओल्ड लेक्चर थिएटर्स में होते हैं. आप नए लेक्चर थिएटर्स देखेंगे तो हमारे जो लेक्चर थिएटर्स हैं वो एक्चुअली स्मार्ट लेक्चर थिएटर्स हैं. तो हाउ वी स्टार्टेड एंजॉयिंग द कैंपस लाइफ. We initially we did little things. Then I said that we are going to watch or be a part of the launching of Chandrayaan-2. And I tell you, this auditorium was full of children, faculty, their families. I had already ordered 40 kilos of laddu in advance. People told me, Madam, आपने लड्डू बुलवा लिया. I said, चांद पे भारत उतरे ना उतरे, हमारे दिल में चांद होता रहेगा. And we are going to celebrate it. All of us, as a group, we watched the launching of Chandrayaan-2, and you just cannot imagine the energy of that room. You see the videos, I don't know, he must be having, मतलब हमारे बच्चे पागल हो गए. इतने पागल तो आप अपने रोमांस में नहीं हुए जितने हमारे बच्चे इन्फेक्शियस देशभक्ति में चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में हो गए. और उसके बाद we went about with the social gathering. Then when I was the president of, why I am telling you all this is you have to understand how lives have changed.
So when I was the president of the Medical Teachers Association, I said that, I have always been a part of this auditorium since the day I walked in. So I told my friends, our teachers have to themselves be happy. So that is the point we had the first medical teachers night, where we involved all the medical teachers and their families, and it's such a gala happening. Those people जिनको आपको लगता है ना गाना गाते हैं ना मटकते हैं, उनका डांस देखेंगे आप तो आप पागल हो जाएंगे. So from there now that I am the dean, I said we must now move forward to the second medical teachers night. So we have the second medical teachers night. Just 2 days back on 14th, we had the first Sarvajanin Saraswati Puja in the campus. We had a permanent installation of Goddess Saraswati, and we actually went with Pratishtha because I wanted to embody the statue of that statue which we had actually ordered and got from Rajasthan. We transported it all the way from Jaipur and made of the same stone as Ramlalla. So please go and see the statue in front of the library. And my commissioner asked me, why do you want a statue? I said, I want a statue of Almighty. That Almighty could be anyone. It could be Allah. It could be Jesus. It could be anyone. But at one point, they need to go and stand and say, oh God, I'm going to do my exams. Oh God, my children are not well. Oh God, my father is unwell. He's getting treated. Please be with me. So that is, you should have seen the energy in this auditorium 2 days back. All are paramedical, and this was one gathering which I guess happened in the first time in the entire history of this medical college, where every officer to the sweeper to every student was involved, and I made sure that when the Havan was happening, all my Safai Karamcharis, all my security staff, they got to sit at the Havan and offer their obeisance to God, because I realized that this is time we need to move forward. We have to look beyond the caste, we have to look beyond the creed, and we have to unite in humanity. और वो जो पॉजिटिविटी गई मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स, मेरे सफाई कर्मचारी, मेरे सिक्योरिटी गार्ड जो पीछे खड़े थे, जिनको लगा कि मैडम हवन कर रही है, और जब मैंने उनको बोला आप आइए हवन कुंड में, तो वो जैसे भाव विभोर हो गए. उनको ये महसूस हुआ कि ये ऑडिटोरियम, ये कॉलेज उनका है. That is the spirit why you will find that this hospital, which now has 2,646 beds currently, we are 2,646 beds currently, is still clean. We are struggling, yes, there is tobacco, there is certain things, we are struggling. But then you will still realize that with 2,646 beds, at least 2 attendants per patient, poor patients, we are still clean. Because people have now started to belong to the campus. There is so much for you to know about this campus now. We have so many departments. We have 4 super specialty courses. We have 6 MCH in neurosurgery. We have 2 MCH in neurology. We have 6 MCH DM in pulmonary medicine, and we have 2 MCH in pediatric surgery. This year we'll get DM in cardiology, MCH in plastic surgery, and we are also moving ahead to get more MCH courses. The journey has been so long, you would have missed the campus. And I want you to go back feeling that you no longer have deans who must scold, who must look brooded, who must be so strict that you cannot enter their rooms without permission. Go back thinking that your college has moved on.
You are in a place where you carry my message with whole heart that now you are welcome to your alma mater. Come here with open hands, and we look forward for your contribution to making some little change wherever you can. As I said, the government cannot afford many things, and there is so much that needs to be done. Like Dr. Mavi has done for this auditorium, sir, and as long as the sound and light remains, we will always be obliged. I have a little scroll of honor on behalf of this institution, and I'll read out for Dr. Mavi. And I hope, sir, please go and get it framed. And I'm sure that we would be unable to match up to the generosity, but these few words will at least extend some bit of our soul and happiness unto all of you all. Dear Mrs. Jaswinder Kaur and Dr. Salpal Singh Mavi, it gives me great pleasure to write this letter of appreciation to honor your generous donation for installation of the state-of-the-art audio system as a part of the renovation of the auditorium of our prestigious institution. This will help us in organizing scientific presentations, workshops, besides administrative, cultural and social events at medical college premises. I understand and appreciate your deep sentimental attachment with NSCB Medical College, Jabalpur, despite being settled at Ohio, USA. The goodwill gesture to your alma mater on the eve of the inaugural function of Golden Jubilee Celebration Batch 1974 being held on 16th of February 2024 is exemplary. On behalf of NSCB Medical College, Jabalpur, I welcome all 1974 admission batch stalwarts, medicos, and wish them a great time ahead. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। जीवन में सौभाग्य से कई ऐसे लोग, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे बैच से हमसे जो wanting to withhold, but I cannot. Every time Hashmukh sir sits beside me, he is one of the bestest friends I have. I use his tummy for hand resting. But today I am just popping my eyes out and I don't know what you girls have done to him. It is all in, means I am bothered where I am going to rest my hands. You are looking great and handsome. Jai Hind, Jai Bharat. उसने तराशे नाने का दर्द अपितु इसलिए कि उसने तराशे नाने का दर्द सहा है। Thank you for your We have inspired by you, madam. मैं आज के डिग्निटरीज हमारे प्रोफेसर सर लोग हैं, उनसे उनको फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ पर कुछ नाम लेता हूँ। कृपया सामने आ जाएं सब। डॉक्टर JP कपूर सर हमारे प्रोफेसर रहे और यहाँ के काफ़ी लर्नेड टीचर भी रहे। इनको फेलिसिटेट करने के लिए डॉक्टर मावी और डॉक्टर RS तिवारी को यहाँ पर मैं बुलाता हूँ। Because they asked me, I'll just let all of you know कि आप ना छोटी से छोटी contribution करें, if it is even 5,000, it does not matter. You pick up a cause. मतलब जैसे मेरा बहुत मन है कि मेरा किचन एटलीस्ट 50% ऑटोमेटेड हो जाए, कि गरीब मरीज जो खाना खा रहे हैं वो हाइजीनिक हो. I want the washing machines to be very good quality ones so that the linen that is given to the patients is good. तो मैं आपको एक like
with Dr. Mavis we did this. So I don't want that you make any general donations, you know. I may be the dean today, but I may not be the dean tomorrow. So you pick up a cause. You say that, okay, this batch, partially we will give this much for automation of the kitchen. ना हम आपसे 50%, 40%, 30% कुछ भी लेने को तैयार हैं। क्या होता है कि जब जैसे आपकी तरफ से कुछ अमाउंट आता है कि हमने दे दिया किचन के ऑटोमेशन के लिए या लॉन्ड्री के अपग्रेडेशन के लिए, तो इवन इफ इट इज 20-30%, द कॉलेज कैन बी परसुएडेड टू पुट द रेस्ट। क्या है, एक नई चीज में देने के लिए आपने मुझे अगर 10 लाख रुपए देके बोला कि इससे किचन ऑटोमेट करना, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने बार बार बोल सकती हूँ कि देखिए पूरा किचन ऑटोमेट करने में 25 लाख लगेगा, 10 लाख मेरे पास आ गए, आप कम से कम और 15 लाख दे दीजिए तो किचन ऑटोमेट हो जाता है। सो पिक अप अ कॉज एंड देयर आर सो मेनी कॉजेस, यू नो, देयर इज सो मच स्कोप ऑफ वर्क that I say that even if I am the dean for the next 8 years, that is my job remaining, अगर मैं 8 साल तक भी डीन रही और रोज इतना काम करी, तब भी मेरे पीछे जो आदमी आएगा रोज उसके पास इतना ही काम करने का स्कोप रहेगा। So that is the volume of work that can be done in the campus. You just pick up a cause कि हमें ये करना है। If you will ask me कहाँ कर सकते हैं, I can give you 10 things. आप तो गरीबों के लिए बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। Pick up a cause and just do it for that. तो उससे क्या होता है, जैसे आपने 1 लाख दे दिया और उसका कोई कॉज नहीं है, तो वो एक जनरल ऑटोनॉमस के फंड में चला गया। फिर आपको पता ही नहीं कि कहाँ यूज हुआ, क्या यूज हुआ। भाई आपके बैच ने एक कॉज में दिया, तो मुझे पता है इस बैच ने इस कॉज में दिया, तो मैं एटलीस्ट उसको अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेके अप्रिशिएट करा सकती हूँ और उसको रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। Thank you so much. Thank you. I want to make a fresh announcement right in front of everybody. Dr. Mavi on the spot has promised to donate another 5 lakh rupees for that automation. And Dr. J.K. Singh, जो बहुत बड़े दानवीर, आज मेरे पास 6 महीने से लगे कि हसमुख मुझे बताओ मुझे कहाँ डोनेट करना है। He has assured another huge amount, and Dr. Dwivedi has promised another big amount from our gathering, and it will come. I promise that I will do the automation of the kitchen in 2 months time plan. Okay. कुछ दिन में साफ सुथरा आटा गूंदने को हो जाए, साफ सुथरा रोटी बेलने को हो जाए, something. 1 lakh from my side and Sandhya's side. Oh, thank you. Float the tender. I'll talk to Commissioner sir. I'll say sir इतना donation आ रहा है, मैं automated kitchen का tender float करूँ. Whatever balance autonomous society will do. आप समझ रहे हो ना, मैं सरकार को जाके बोलूँ कि मुझे ऑटोमेटेड किचन चाहिए, बोलेंगे कहाँ से? पर मैं बोलूँगी कि आपने दिया। Please come forward. 10 lakhs. 10 lakh. ऐसा डोनेशन हिस्ट्री ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज कभी नहीं हुआ। Get the kitchen automated and send you pics, guys. Just trust me. थैंक यू सो मच सर। सर जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा एक नेम प्लेट, मुझे यहाँ से वहाँ तक पूरे सब में प्लेट लग जाएगी और सारे आपके बैच की ही होंगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत सी जगह